Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. Today we are going to start textbook of biology for grade 9, and that book is of National Book Foundation as Federal Textbook Board, Islamabad. Before going further, subscribe to my channel, press the bell icon so that you can get notifications of all new videos. Okay, now let's start with the name of Allah Almighty, the most merciful and beneficent. The first section of this book is about study of life and biodiversity. The first chapter of this section is Introduction to Biology. The chapter is on page number 6. The major concepts of this chapter are Introduction to Biology and the levels of organization of life. Introduction of biology includes definition of biology, division and branches of biology, relation of biology to other sciences, Quranic instructions to reveal the study of life, and contributions of some of the Muslim scientists. तो चलें स्टार्ट करते हैं. Introduction to Biology, page number 6. I am going to read it and then I will explain it. जी तो लिखा है कि of all the living organisms, human beings are the most intelligent ones. With their intelligence, human beings started learning. With their learning, science developed. जैसा कि हमें पता है कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है और वो उसकी इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम यही इंटेलिजेंस उसकी लर्निंग में इस्तेमाल होती है. As you can see that in the Stone Age, the humans were living their life and they learned so many things with their observations. इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के साथ अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए और अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हुए डेली लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते थे, जो कि फिर बाद में साइंस की बुनियाद बने. ओके जी, द नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. What is science? In ancient times, science meant knowledge or learning. Today, we define science as the study of the world around us. The study of science helps us to answer the how, what, where, and why of our surrounding. In ancient times, यानी पुराने वक्तों में किसी भी काम को करने के लिए इंटेलिजेंस के साथ साथ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस को यूज़ किया जाता था. जैसे फायर लगाने के लिए स्टोन्स को रब करने से फायर प्रोड्यूस की गई, इसी तरह डेली लाइफ के डिफरेंट कामों को करने के लिए ट्रिक्स इस्तेमाल की गई. जहाँ जहाँ भी ट्रिक्स यूज़ हुई उसे साइंस का नाम दे दिया गया. और जब इंसान इस दुनिया में आया तो शुरू में इतनी नॉलेज नहीं थी, चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं थी. आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशंस इकट्ठी होनी शुरू हुई, और जब बहुत सारी इंफॉर्मेशंस इकट्ठी हो गई तो फिर उन्हें कैटेगराइज कर दिया गया. जैसे जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी उनको एक ग्रुप में रख दिया और उसका नाम रख दिया बायोलॉजी. जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू केमिकल्स थी उनको अलग ग्रुप में रख दिया और उनका नाम रख दिया केमिस्ट्री. इसी तरह जो इंफॉर्मेशन नंबर्स से रिलेटेड इकट्ठी हुई उसे मैथमेटिक्स में रख दिया गया. जितनी इंफॉर्मेशन मैटर से रिलेटेड थी जैसे हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को फिज़िक्स में रख दिया गया. यूँ हम कह सकते हैं कि साइंस इज़ द अम्ब्रेला जिसके अंडर ये सारे डिसिप्लिन्स आ जाते हैं. और अगर अब हम देखें तो देयर आर सो मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, सो मैनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑल अदर डिसिप्लिन्स. सो हम आज के लेक्चर में बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में समझेंगे. The next topics which we are going to discuss are again on page number 6, and the topics are definition of biology as well as division and branches of biology. But in this lecture we are only going to discuss definition of biology and divisions of biology. The branches will be discussed in the next video inshallah. Okay, now let's start. What is biology? Biology is basically the scientific study of life. The word biology has been derived from two Greek words, bios and logos.
Bios meaning life and logos meaning thought or reasoning. Or simply you can say study. यानी लाइफ की स्टडी बायोलॉजी कहलाती है. And the life consists of living organisms. There are three types of living organisms: animals, plants, and microorganisms. Study of animals is called as zoology. Word zoology starts from zoo. तो आप zoo से याद रखें, zoo में animals होते हैं. तो study of animal is called as zoology. Then study of plants. Study of plants is called as botany. यानी पौधों की स्टडी botany कहलाती है. Then comes microorganisms. Study of microorganisms is called as microbiology. Micro means small. यानी microorganisms are so small that we cannot see them from the naked eye. And to see microorganisms, we have to use microscope. जैसे viruses, bacteria, etc. Okay जी, that is all about today's topic. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी. If you have any question related to the topic, you can ask me in the comment section. आपको वीडियो कैसी लगी? Please comments में ज़रूर बताइएगा. Take care and Allah Hafiz.